आप सभी का आनंद एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल पर स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। इसमें आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस के टाइप को किस तरह से सेपरेट किया गया है, इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। Chemical reaction is nothing but it is the breaking and making of bonds between atoms to form new substance. Here we can also this line is the chemical reaction involve the breaking and making of bonds between the atom to produce new substance. तो हम जब भी एक केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या तो न्यू बॉन्ड बना रहा होता है या फिर जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा होता है स्मॉल एलिमेंट्स में। इस बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शन की एक टाइप को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट हो और अगर वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस तरह के इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन का या फिर केमिकल रिएक्शन का एक टाइप माना जाता है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि फॉर्मूला है क्विक लाइम का, और वाटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब वाटर में क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना को जब डाला जाता है तो हमें यह प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना में हमें एक प्रोडक्ट देता है और साथ ही साथ ये हीट को भी रिलीज करता है। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि वो रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इससे हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे कि reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से जब हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नाउ लेट अस मूव टू another type or another example which where we can see easily burning of wood। जब
coal को burn किया जाता है in the presence of air, and we know that coal is a component of carbon which is in the form of solid. और इसे जब burn किया जाता है air के presence में, then we get carbon dioxide which is a gas. So यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं. So this is an example of a combination reaction. Another example, we have formation of water from hydrogen and oxygen. So हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हमें दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, दो गैसेस दिए गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये रिएक्ट होने के बाद हमें लिक्विड वाटर प्रोडक्ट में देता है. सो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं which is also an combination reaction. Now let us move forward. So here say that when two or more substances, element or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. The same thing also written here. Here this make the reaction mixture valve. This reaction in which heat is released along the formation of product. Exothermic chemical reaction. Remember this thing. When an reaction happen during or after, during the happening reaction, if heat is used from this reacting process, then this type of reaction usually called exothermic reaction. Here this reaction water is exothermic reaction because it makes product calcium hydroxide and also release heat. This reaction releasing heat, this is called an exothermic reaction. So, we have some more example of exothermic reaction, which is burning of नेचुरल गैस. जब नेचुरल गैस बर्न होता है तो यूजुअली हम जानते हैं कि वहां से हीट रिलीज होना कॉमन सी बात है. तो जब मीथेन जो कि गैस से इसे एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमें प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और साथ ही साथ हीट रिलीज होता है. Remember one more thing, that respiration is also an exothermic reaction. How? Let us reaction.
Because that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we get during digestion. Food is broken into simpler substances. For example, rice, potato, bread contain carbohydrate. These carbohydrates broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy. This the special name of this reaction is respiration, the process of या सो हमने हम जानते हैं कि जो हम फूड ईट करते हैं उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम गैस का यूज़ करते हैं मीन्स हम ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में वाटर और फूड मटेरियल को सेल्स के बॉडी के हर एक पार्ट और सेल्स तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सेल्स सेल्स इसे अपने इंटीरियर पार्ट तक पहुंचाने के बाद सेल्स के कुछ पार्ट इन फूड मटेरियल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एक एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। So we also know that digestion is an chemical reaction, and because in this process of respiration is due to respiration our cell produce energy. So we can also say that respiration is an exothermic process. The example is the decomposition of waste matter into compose it also an exothermic of an exothermic example of exothermic reaction। तो जब हम फूड को बना रहे होते हैं तो उस समय भी काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। सो ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नाउ लेट अस मूव टू decomposition reaction. Decomposition reaction is have decomposition reaction have just opposite characteristic to composition reaction. In composition reaction, two or more reactant combine and form a unique product, but in the decomposition reaction, a unique reactant decomposing it break down into two or more than two products. So we can see here in the reaction of ferrous sulfate after providing heat to ferrous sulfate, this reactant will decompose and after decompose it will give us ferric oxide and SO2 gas and SO3 gas. So this is an example of decomposition reaction. See this reaction, you can observe that the single reactant break down to give simpler product, and this is a decomposition reaction. Now let us see some more example of decomposition reaction. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide.
is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called quicklime. We also know from the previous equation it has many uses. One, in the manufacture of cement, when a decomposition reaction carried out by heating, it is called thermal decomposition. So जैसा कि हमें पता है हमने पिछले रिएक्शन में जो कि कैल्शियम ऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब जब केवल अब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट जो बनाएगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइम एंड carbon dioxide. So in the decomposition reaction, here we have example that is calcium carbonate, which is limestone. Providing heat to limestone, then it will become calcium oxide and carbon dioxide will release. So this reactant, single reactant, is break down two into two products. So this is an example of a decomposition reaction. And one more thing, that when a reaction happen after providing after providing heat, when a reaction happen after providing heat, so this type of a reaction is called thermal decomposition reaction. So what is a thermal decomposition reaction? Remember, when a decomposition reaction is carried out by heating, it's called thermal decomposition reaction. Here also we have some example of decomposition reaction, that is when lead nitrate PbNO3 2, after providing heat, it will break down into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen, which is example of decomposition reaction. This activity 1.7 is very important of view of exam. For mainly one marking question usually question paper this activity. So please read it once. Your
we learn one important point, that is, we have seen that decomposition reaction require energy in the form of heat, light, or electricity for breaking down the reaction in which energy is absorbed by absorbed or not endothermic reaction. What is the endothermic reaction? Endothermic reaction in which we know decomposition reaction needs or require energy to break down its reactant into two or more than two simpler form, and these energy are usually in the form of heat, light, or electricity. So this type of reaction is called endothermic reaction. These endothermic and exothermic reaction are frequently asked in question. So be prepare yourself for this type of questions.